I'm back to day 65 of daily code log, and today we'll be solving ThemeCP. Version 1 is down, so on version 2 I will be solving level 5 with the set to next. So without wasting any time, let's get started. What are the inputs here? क्वेश्चन काफी लेंदी है. Inputs 3 टेस्ट केसेस है जो कि ठीक ठाक है. And the only line of each test case contains two integers x and y. Okay, 10 to the okay. एक x जो है that would be 9 8 से बड़ा and नहीं 8 से बड़ा नहीं response करना and नहीं रहेगा and tetroid so negative y can be negative if it's possible to make a parkour course that satisfy the condition yes या no देना है output में. Today Alex wants to build a parkour course for Steve to train his parkour skills on. A parkour course is sequence P0 P1 से Pk तक on integer coordinates on the plane. Okay, it's a plane. Here, a contiguous pair of coordinates called move. Multiple P I minus also Pi. What is contiguous pair of move coordinates? Alex knows that Steve can only perform the following types of move. X, Y है, फिर X plus 2, Y plus 1. Plus 2 plus 1. Plus 3 plus 0. अच्छा, these moves are only allowed कि 2 फॉरवर्ड 1 ऊपर या तो 3 फॉरवर्ड 1 ऊपर तो 4 फॉरवर्ड 1 नीचे. Okay. Note that Steve will not perform any other type of move. For example, Steve cannot perform these moves. Never perform moves such as a given integer coordinates x, y on the plane. Please determine if the possible to make. What are the conditions? Please determine if it's possible to make a parkour course. The following condition है कि Q start होगा 0 0 and K होगा x y. I have to reach x y using these moves.
ओके, तो 0 से xy तक पहुंचना है यूजिंग सेट मूव्स. ओके, in all these moves I can move forward and upward and downward. Okay. So the 11 first is 2-1. मेरे को 2-1 पहुंचना है. I can because 1 is a move. And next. So usually I have to reach that something. X, सारा X moves. नहीं. Okay. Pairs. They're not individual. 3-0. Can I reach 3-0? This is all 3-0. So no, I cannot reach 3-0. दो करके ऊपर चले जाएंगे. Three is no. 4 minus 1. Okay. 4-1. 2 ऊपर. नहीं, 4-1 भी नहीं होगा. Yes, no, yes, no. 14-1 हो जाएगा. 2-2-2 नहीं होगा. हो सकता है if 14 को 4 से डिवाइड करें तो 12 और -3 हो जाएगा. 12 minus 3 या 10 minus 2 हो जाएगा. उसके बाद 12 1 14 0. 14 0 हो सकता है. Then नहीं 8 हो सकता. 8 minus 2. Then we go 9 10 11. 8 फिर 2 2 2 minus 2. No, 14 1 भी नहीं. Oh yes, yes. 3-0. कैसे? Fifth test is 3-0. It's possible to. Okay. I can move 2 1 2. Oh, 3-0. 3-1. This changes. It's 2 2 1 3-0 4 minus 1. 3-0 हो जाएगा. 4 minus 1 हो जाएगा. 4-1 नहीं होगा. 14-1 नहीं होगा. हो जाएगा. अब 0 पे रहना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 14 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 9 हो जाएगा. फिर 4 से एक्चुअली 12 हो जाएगा. और 2 डाल के हो जाएगा. उसके बाद 1 minus 4 होगा. बस 4 3 minus 1 होगा. What we are doing कि कुछ पार्ट कुछ सॉल्व कर रहे हैं. देख रहे बाकी पार्ट कोई और कर पा रहा है कि नहीं. राइट.
एरर मूव होना चाहिए कि तीनों ऑप्शन यूज करके देख सकता हूँ। ये यूज कर लिए। ये -1 210 होगा, वो -3, तो दैट इज 0 से मेंटेन करेंगे। 3 4 जा 2, तो 7 जा 21, तो 18 तक जा सकते हैं। उसके बाद 18 + 4 कितना होता है? 22 -3 है, तो एटलीस्ट मेरे को कम से कम 3 4 तो लगेगा, राइट? तो गेट दैट -3 इंटू -3 इंटू -1 इसके साथ आ जाएगा, और 3 इंटू 4 12 हो गया। बाकी का कवर करना है 0 कॉस्ट के साथ, तो 12 कवर हो जाएगा 3 से। हाँ 8 4 हो जाएगा। 4 है, पॉजिटिव कौन दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है मेरा 2, तो कम से कम 2 2 तो लगेगा, 4 2, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4 एंड 4 इंटू 2 दैट इज 8 हो गया। तो वी कैन डू विद दिस थ्योरी कि बाकी जो भी बचता है दैट शुड बी मैनेज्ड बाय 3, ठीक है? तो क्योंकि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव से मिला जुला के 14 जैसे है, 14 और 1 है, तो इसमें कम से कम एक पॉजिटिव तो लगेगा, दैट इज 1, और यहाँ पे 1 इंटू 2 दैट इज 12, तो 12 और 0 क्या 3 संभाल सकता है? खत्म। तो एरे नहीं लेना, एन भी नहीं लेना, एक्स वाई 3 एक्स वाई, तो क्या करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव डिटरमाइन करना है। इज मोर देन 0, देन जितना भी पॉजिटिव है उतना 2 लगेगा। इन रेम जो कि x है, int more इक्वल्स टू x माइनस, जैसे पॉजिटिव है तो 3 या 4 स्टेप में जो भी लगेगा, तो x माइनस 2 इंटू वाई, सही? जैसे कि आई हैव 2 स्टेप है, तो जो भी ये मोर हो गया। ये मोर यहाँ सेट हो गया। इफ
एल्स बाद में सब करेंगे। या तो पॉजिटिव होगा, एल्स y लेस देन 0, तो मोर इक्वल्स टू y नेगेटिव है, तो x माइनस एब्सोल्यूट ऑफ y, ठीक है, इंटू दो तीन जो भी आया 4, क्योंकि उसका x में 4 का मूवमेंट था। एल्स more equals to x if more divided by 3 0 see out yes 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 फिर नो है और दो यस, ये वाले में गड़बड़ है। उसके बाद नो है, ठीक है, उसके बाद यस, उसके बाद नो है, ठीक है, फिर दो यस है, ठीक है। ईस्ट टू पूरा फिटिंग, थोड़ा सा दिक्कत, ये दो हो गया, ये भी ठीक है। 210 210 है, 10 है, मतलब कि मेरे को ये करना होगा पॉजिटिव 10, तो 2 10 20 का मूवमेंट करना होगा इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। -18 आ रहा है, नेगेटिव हुआ तो खत्म। और क्या नाम नेगेटिव है, ये कौन सी लाइन में है? मोर कैनॉट बी नेगेटिव, पीछे नहीं जा सकता, कोई वैलिड मूव नहीं है पीछे। यस नो यस नो, पीछे यस, अरे यस नो यस, 1 2 3 4 नो, 1 2 3 4 नो, 2 यस। Accepted.
अदर प्रॉब्लम भी करते हैं। कितना टाइम बचा? इनपुट क्या है इसमें? What are the inputs? So P is okay, 1000 or the first line of which test case contains a single integer n. So we have n. क्योंकि 2e5 है, we need a logarithmic or linear solution for this. We have the array. ठीक है, can have negative, can have -1 and 0 also. Okay, -1 और 0 हो सकता है उसके अंदर. And okay, for each test case on the first line output the minimum possible value of, ठीक है, तो each test case जो first line है, minimum possible value of सारे b को सम करने के बाद उसके एब्सोल्यूट ऑफ सारे b को सम करने के बाद उसका एब्सोल्यूट चाहिए. Then on the n-1 up to n-1, 1 से स्टार्ट करो तो n तक जाना चाहिए, तो n-1 है. Then on the second line output n integers sum चाहिए, minimum चाहिए, उसके बाद n integers the value of a1 a2 a3 in the lexicography चाहिए. a1 a2 lexicographically smallest. Okay. 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 So input, ठीक है, let's take the input first. Okay. Now it is okay. Input ले लो. इनपुट ले लिया गया है. नाउ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यू इज ट्राइंग आउट द स्टूडेंट कॉन्सेप्ट. ओके, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं. मे बी इज टेकन अ रोल. अनफॉर्चुनेटली शी इज बीइंग फोर्स्ड टू डू क्लरिकल वर्क. ओके, को wants her to fill out the blanks in various students' council documents. Okay. Then the blanks. Now, you are given a partially filled array of non-negative integers. Non-negative integers भरा हुआ है. A से लेके फिर blank elements are denoted by -1. Okay, -1 मतलब blank. You would like to fill in the blank elements with non-negative integers. Positive integers से भरना होगा. That includes 0. Non-negative. 0 is also non-negative. Such that the absolute value of the sum of the element in its difference array is minimized. तो उसका अगर difference array बनाते हैं
non-negative such that the absolute value of the sum of the elements, absolute value of the sum of the element in its sum of the elements in its difference array is minimized. Okay, absolute value ABS of the sum, मतलब sum का absolute किसका सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द डिफरेंस एरे, तो डिफरेंस एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उसका सम करेंगे और उसे एब्सोल्यूट करेंगे, दैट शुड बी द मिनिमम. मोर फॉर्मली लेट बी बी द एरे ऑफ n minus 1, एक छोटा एरे है which is size n minus 1 such that bi जो है b का करेक्ट एलिमेंट इज द डिफरेंस ऑफ आगे का एलिमेंट करेंट एलिमेंट ऐसे ऐसे गॉड है. Find the minimum possible value of this across all possible ways to fill in the blank elements of A. Okay, तो A में -1 भरना है. -1 को हम लोग कुछ भी रख सकते हैं. Additionally, output the array that achieves this minimum. If there are multiple such array, output the one that is lexicographically small. Okay, for two arbitrary characters. Okay, I know lexicographically small is dictionary में जो पहले आता है lexicographically smallest and okay ठीक है. Let's understand some examples. 2 minus 1 7 1 है. Okay, we have 2 then minus 1 then 7 then 1. Okay, अब -1 needs to be filled such a way that the difference array total sum absolute is minimized. Means अगर okay, so absolute को minimize करना है तो absolute कर दे, that means negative भी आए तो भी matter. So गोल होना चाहिए जितना ज़्यादा जीरो से स्टिक कर पाए उतना अच्छा. Okay, so we cannot put negative numbers here, so we can put a 0. 2 0 7 1, so the 2 से 0 minus करें. Okay, we can introduce a smaller number so that difference array will have a negative number, इसकी वजह से जो absolute है that will be closer to 0. Okay, so 2 and 0, तो 0 minus 2 will be a negative 2, 7 minus 0 will be 7, 1 minus 7 will be negative 6. So we have this configuration here जहाँ पे total negative 8 आ रहा है and we have plus 7 that is negative 1 and sum is absolute value 1 आ रहा है. I could have put 1 there, जिससे क्या होगा कि negative to negative 1 हो जाता और 7 minus 1 will be 6, negative 6, negative 7 and negative 6. If I have had put to the 0 5 1 0 फिर 5 minus 7 minus 2 5 and यहाँ पे हो जाता negative 6, फिर भी मेरे पास 1 ही आता. if I did put the 3 और वहाँ 3 होता तो positive 1 आता and 7 and 3 को माइनस करने पे 4 आता तो negative 6 आता. This is not changing. तो 5 minus 6 हुआ. ठीक है, तो फिर इसको और बढ़ाते हैं, 4 रख देते हैं, ये 2 हो जाता, ये 3 हो जाता. ओके, 5 ही रहेगा वो. अगर उसको 5 कर देते तो
3 हो जाता, 7 है, तो 7 माइनस 5 is 2, जो सम मेंटेन हो जाएगा। Whatever I introduce in this space doesn't change the difference, तो 1 ही आएगा। तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा, putting a 0 there. Okay, interesting finding. -1, 2, 4, -1. Okay, now we have 2 spaces to fill. Okay, so यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो I will have 2 minus 0, that is 2. Great. तो यहाँ 2 पुट करते तो 2 minus 0 हो जाता। Great. Now 4 minus 2 will be a 2. Now what I should put here कि खत्म हो जाए, तो एक छोटा नंबर यहाँ अगर 2 पुट करें तो 2 minus 4 will be -2 and we can, it is 0, तो दोनों जगह 2 होगा and we can get 0। दोनों जगह 2 भी हो सकता था और दोनों जगह 0 भी हो सकता था, बट 0 was the lexicographical smallest one। 0 होता तो यहाँ पे आता +2 और 0 आता यहाँ पे -4, बीच में एक 2 था, तो +2 and a -4 is okay। Okay, तो I could have known that, तो सबसे पहले ठीक है, let's not try to figure it out। फिर ये सिस्टम है, सो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहिए। 2 -1 1 5 11 12 1 -1, we have 2 spots to fill। Actually we have one in the middle, जिसकी वजह से एक्चुअली 2 था, तो कुछ भी डालेंगे, आई थिंक द डिफरेंस विल बी कंजर्व, 2 - 1 होगा। 0 डालते हैं, डिफरेंस एरे का सम कर रहा है ना, इट्स एक्चुअली x minus y, ठीक है, x minus y plus z minus x minus y plus z minus x। यहाँ पे x doesn't mean anything, अगर बीच में आ जाता है तो बीच में आ जाए तो कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो, works। So अगर it comes in between तो 0 डालना है, comes at the end तो क्या करना है, अगर एंड में आ रहा है, ठीक है, एंड में आ रहा है तो 0 डाल दिए यहाँ पे, 0 डालने पे what are we getting, 2 - 1 again 0, we are getting a -2 here and 1 minus 0, +1, then a +4, then a +6, then a +1, then a -11, okay, 10 11, this part is cancelled out, we have -1 in our hand, and this can do, we put 0 there, well, a -1, but we want a +1, so 2 अगर वहाँ डालते, what is it, so 0 and 2, I think will be the answer, 0 and 2,
डेट। तो बीच में आ जाए तो ये वाला एब्सोल्युटली जीरो होगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, सारे हैं तो सबको जीरो डाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं डालना है। फ्रंट में है तो जीरो डाल सकते हैं, बट वहाँ अगर एक सेम नंबर डाल दो, जैसे कि -5 तो नहीं डाल सकते, 4 डाल सकते हैं, तो 5 - 4 will be 1, put a 4 there, you can put a 5 there. So तो बात क्लियर हो गया कि बीच में अगर आ जाए तो डजंट मैटर क्या है, फर्स्ट और लास्ट में आ जाए देयर कैन बी सम केसेस। फर्स्ट में आएगा तो लेक्सिकोग्राफिकली जीरो डालना विल बी द वाइजेस्ट एंड वी कैन एक्सपेक्ट टू सॉल्व दैट लेटर। बट अगर सिर्फ -1 होता है एंड 2 एंड 4 होता है देन व्हाट, यहाँ पे था +2, यहाँ पे एक 4 लाना बिनवाइजर, क्योंकि 2 - 4 will be -2 and 4 - 2 will be +2, 0 हो जाएगा। Reducing a second -1 changes the equation because ये दोनों एक दूसरे से जितना जनरेट करेगा, ये उसका उतना ही नेगेटिव और ये उतना नेगेटिव जनरेट, -2 +2 -4। फ्रंट एंड एंड में होगा तो 0 0 डाल सकते हैं, मिडिल में होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, 0 डालना, बस एंड में या फ्रंट में हो तो दैट कैन बी डिफरेंट केस। ओके, 3 केसेस। फ्रंट और एंड में हुआ तो जस्ट एनालाइज द डिफरेंस, put a x there because we will definitely have say इसको x मान ली, तो -1 to 4, तो x अगर मान लेते हैं तो -x 4 - 2, एंड में क्या आ रहा है x y z, y - x is getting cancelled, I believe. नेगेटिव तो z अगर 4 है तो okay, 2 4 -1 then x y z, y - x plus z minus y, I cancel side for sure, -x plus z, n में हुआ तो जो भी है पॉजिटिव नंबर ही होगा, उसका नेगेटिव डालना, तो -2 है एंड +2 डालना, और फ्रंट में होगा तो फ्रंट में होगा
should be a positive number. Z is 4. Okay, in both cases I need to put the same number. Okay, great. If it's a longer sequence then got it. See, simple है. If सिर्फ फ्रंट या बैक में माइनस बचा है तो जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको बस कॉपी कर देना है एंड बोथ साइड है तो उस दोनों को 0 कर देना है एंड बीच में अगर है तो फिर दिस इज डन. तो क्या करना है, ठीक है, गिनते हैं, चेक करते हैं कि ओके इफ इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ देन क्या करना है. तो बीच का कोई एलिमेंट मैटर करता नहीं, ठीक है, बीच में कोई एलिमेंट मैटर नहीं करता. सो आई नीड टू चेक कि फ्रंट और बैक में माइनस है क्या. तो इफ बी 0 minus b n minus 1 so else if b 0 equals to minus 1 else if b n minus 1. ठीक है, ये 3 केसेस है. इफ दोनों -1 क्या करना है, और लूप चलाना है. v I equals to -1 v I equals to 0. इसके बाद अगर पहला वाला -1 है तो v 0 इक्वल्स टू v n minus 1, एकदम एंड वाले को कॉपी करना. और अगर v n minus 1 ऐसा है तो v 0 को कॉपी करना. ये पूरा फॉर लूप चलाने की जरूरत थी दोनों 0 बनाने में. v 0 इक्वल्स टू 0 v n minus 1 इक्वल्स टू 0. कितना ही करना. टू 071 ठीक है. वेट वेट वेट. अब इसका सम मुझे चाहिए होगा बिकॉज एवरीथिंग कैंसल्स आउट. एवरीथिंग कैंसल्स आउट, नथिंग इज लेफ्ट. तो बीच का कुछ मैटर करता नहीं है. सो व्हाट इज लेफ्ट इज पहला वाला एंड एंड वाला. वी कैन जस्ट गिव द सम टू देम, डिफरेंस टू देम. एक्चुअली पॉजिटिव है नेगेटिव. तो see out absolute of v n minus 1 subtracted by v 0
इसमें कुछ डिफरेंट सारे बनाने का जरूरत भी नहीं था. This was just a game of cancelling out. 1 0 0 0 2 0. Let me check. 0 0 0 2 0. Okay. Refresh. तो हम सी करते हैं. सी What is the input? सबसे पहले input देखने का. Okay, so मेरे पास t test cases है, which is 10k. इसके बाद we have n और a. What is n? n का लिमिट है 1 से लेके 3e5 तक. ओके, बिग नंबर. वो एरे का साइज होगा मोस्ट प्रोबेबली array is big. Then we have a, which is a number of marbles in the bag, and the number chosen by Alice. Number of marbles, number Alice का chosen number, which is number. Second line contains the array 1 से vn तक, and okay, for each test case output a single integer. We have to output b. Yeah, what is b? Which can be 0 to 10 to 10 to the power 9. That Bob should choose to maximize the number of points he receives. Max Bob points. Maximize Bob points. If there are multiple such numbers, you can output any of them. तो सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं. We have n और a and then the array. n है और a है. We have the array. ठीक है. array हो गया. Now input. Alice and Bob have a bag of n marbles. They have n marbles. Okay, with the integer vi written on the ith marble. Integer vi written on the ith marble. Okay. Okay. एक integer लिखा हुआ है on the ith marble. Marble has some numbers written on them. They play the following game. First, each player chooses an integer. Okay. Let's denote the integer chosen by Alice as A and integer chosen by Bob as B. After that, they start drawing marbles from the bag in any order until the bag is empty. कोई भी order में से they are taking out marbles from the bag. Okay. Randomly spread है, but they take out marbles from. For each ball, the point goes to the one whose chosen integer is closest to the integer on the marble. जैसे कि for each ball, the point goes to the one. अगर एक बॉल है, point goes to, कोई भी उठाए doesn't matter, but if it's closer to the integer that
other player has, that player gets the point. In case of tie, in case of tie, Alice gets the one. अगर tie हुआ, both equidistant है, Alice gets. ठीक है. For example, if A is 10, B is 30, that's some. Okay. For marbles with integers 10, 1, 7, 18, 10, and many others, or else gets the points for that. So you'll get a point for the marble 20 because it's in the mid. So closer, less than equal to, basically equal to be Alice के साथ है. For marble 7. Okay. 900. I'm saying I have A. Just I need to get a point P. जिससे कि वो आपका पॉइंट्स मैक्सिमाइज हो जाए. तो देयर आर मतलब मार्बल्स 1 से n तक नेम है आपका. ठीक है. नहीं, we have an array. We have a predefined array. Okay. We have a predefined array. Okay. Now, if we get the average of these numbers, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay. I don't think these will be sorted. Yeah, they are not going to be sorted. नहीं sorted है. Okay, they are sorted. Okay. Now, Alice has given a choice 21. Anything that is in range that is closer to 21 than to Bob's value, then point. How do we define something closer to 21 far from Bob? Let's A को अगर हम लोग बोलते हैं कि ये B is Bob, then यहाँ से सब Alice का, यहाँ से सब कुछ Alice का. Everything smaller than A will be Alice का. And everything average of जैसे कि everything Bob जो भी नंबर चूज किया जाए उसका एवरेज आएगा. From that average below everything is okay. तो ये एवरेज है. तो अगर मान के चल पॉइंट्स मार्क करते हैं कि किस दिस इज बाइनरी सर्च और आंसर आई बिलीव, बट 900 में आई डोंट थिंक. क्या 15 कैन बी दैट नंबर या समथिंग लाइक दैट.
Okay, I will be back in 5 minutes.
I'm back. I think I have figured it out. मिनिमम नहीं, मिनिमम को नंबर मिनिमम होना जरूरी नहीं, बट नंबर होना चाहिए जो कि काम करे. I think I have 335. So, उससे देखना होगा कि इस नंबर से ज़्यादा एलिमेंट्स +1 करना है या -1 करना है, बस नहीं करना. ठीक है, चलो. ये मैप करने का भी जरूरत है. More than equal to more than a more plus देख उसके ऊपर गिरेगा तो नो वन कैन प्ले, राइट? तो it's less than plus नहीं जानना मेरे को. If more is more than or equal to x, ठीक है. Okay. Now, if I have 22, then 30 is closer to 22, 40, 50, 60, and again 499. 200 is closer to 499. Here go. I have 3, and that guy has also 3. It's a tie. That guy takes it all, and I take nothing. Okay, so I just need to output the number. I think I have done it. Submit the code, and let's check it out. Wait. Okay, we have this offshore problem. How I solve this one? Okay. Input later. So.
ओके, इनपुट देख लेते हैं। इनपुट है, ओके, ये टेस्ट केसेस है मेरे पास, ओके, एंड द डिस्क्रिप्टर ऑफ द टेस्ट केस फॉलोज, ठीक है, n है, x है, y, ठीक है, तो n विल बी 2 से लेके 2e5 तक, n is a big number, most probably the array size. Then we have x, which is, okay, y, which is less than equal to x. Number of banks, transfer amount, and the credit amount. Banks transfer credited, मतलब मिला है जो, transfer जो कि I have given, so given amount will be smaller and received amount will be more. I cannot do this. The next line will be the initial amount of the rubles in each bag. Each bag में कितने पैसे हैं, ओके, तो इनपुट ले लेते पहले। क्वेश्चन क्या है, आउटपुट इन सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रबल्स दैट कैन बी ऑब्टेन इन फिल बैंक में मैक्सिमम नंबर ऑफ रबल्स ऑब्टेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे पास होगा x, Mark loves money very much and he kept most of it in the bank. He stores his money in different banks. The IF bank, he has AI rubles. One day, he decided to gather all his money in one bank. एक बैंक में सारा पैसा जमा करना है, so अच्छा, so he will be transferring money from one bank account to another. All enter and transfer are arranged the same way. You can transfer only X rubles into one transfer. सिर्फ इतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं। can only transfer X rubles ruble. Transfer only X rubles in one transfer. एक ट्रांसफर में इतना हम दे सकते हैं। And considering rupees, Y rubles will be credited. Y rubles थोड़ा कम, थोड़ा घटा के फिर आ जाएगा। Possible that Mark will not be able to transfer all his money to one bank. Is it possible that Mark? It is possible. ये possible है कि Mark क्या कर सकता है कि able to transfer all his money exactly X amount होगा तभी ट्रांसफर कर सकता है, और ये भी possible है कि सारा पैसा ट्रांसफर ना हो, but he wants to find the maximum rubles he can. This is the input की 4, 5, 4 and 3. तो अगर 5 भेजेंगे तो 4 मिलेगा, अगर तो स्ट्रैटेजी क्या होगा कि indirectly transfer to a bank. तो कम अमाउंट ट्रांसफर करना विल बी वर्थ इट, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट मतलब ज़्यादा डिडक्शंस, कम अमाउंट कम डिडक्शंस, क्योंकि ग्रुपिंग तो सेम है। तो क्या कर सकते हैं कि 7 में से
10 को भेजेंगे। 7 में से हम कितना निकाल सकते हैं? 7/5 1 into 4। उसके बाद 8/5 1 into 4। 9/1 into 4। 12 plus 10 22। वहाँ से चलो मान के चलो कि इतना सारा अमाउंट्स वेस्ट थोड़े होने देंगे। यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अमाउंट 8 को भेजेंगे। इसको भेजने से वहाँ से कितना लूज करेंगे और कितना प्रॉफिट होगा। ड्रॉप करना, वहाँ ड्रॉप करना इज लूजिंग इतना अमाउंट, एंड जो रेसिड्यू बचा रहे वो मेरा प्रॉफिट है। रेसिड्यू do more than deductions. The residue is AI mod x, और रेसिड्यू पता चल रहा है। अगर डिडक्शंस कितना हो रहा है, डिडक्शंस हो रहा है ए आई बाय टारगेट करेंट। बाय देखो ये उधर हम भेजेंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा है दैट कैन नॉट बी कैरिड ओवर, राइट? एक्स्ट्रा कैरी ओवर नहीं हो सकता। तो यहाँ 25 कैसे आया? आई वांट टू नो। पहले वाले से 4 निकाला गया, फिर 4 निकाला गया, फिर फोर्थ वाले, पहले वाले से फोर्थ को भेजा गया, पहले वाले से फिर फोर्थ को भेजा, चौथे वाले से थर्ड को भेजा गया, चौथे वाले से फिर थर्ड को भेजा गया। तो ऐसा बात है ना कि मॉड होके एक सर्टन वो कम हो जा रहा है, तो वहां से सर्टन चीज पिक कर सकते हैं जैसे भी, है ना? तो इसको यूज कर सकते हैं, वही पूछ रहे हैं। वेस्टेज मिनिमाइज करना, ये परफेक्ट नंबर है। तो जिसका वेस्टेज सबसे ज्यादा है ना, उसको हम लोग कर सकते हैं सारे नंबर्स के बाद भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। 9 में अगर भेजने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है? 8 में अगर हम लोग ट्रांसफर कर दिए रहते हैं, देन वी कुड हैव स्पेंट टू 9। तो 7 में अगर भेजते हैं तो फ्री मूविंग एसेट्स कितना है? 10 कैन ये सब फ्री मूव कर सकते हैं। 7 को चाहिए तीन सेट्स ऑफ
4 एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है, 7 + 4 is actually 11, which is रिड्यूस कर दे रहा है नॉट। ये 2 चाहिए, उतना ट्रांसफर चाहिए एंड इट विल बी स्टेबल। अगर 10 से 2 ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? तो ट्रांसफर करेंगे हम 2 का ही प्रॉफिट होगा, वहाँ से कहीं तो वो 0 हो जाएगा। 8 में क्या हो रहा है? 8 outside will be 3, 3 ट्रांसफर्स का ज़रूरत है, 3 ट्रांसफर्स का ज़रूरत है एंड इट विल बी कंप्लीट। ठीक है, फिर 4 से 3 को बेचते हैं, 4 से 3 को बेचते हैं, 4 से 3 को बेचते हैं, 3 सेट, 2 सेट भेजे एंड इट वाज 15, 3 सेट फिर भेज सकते हैं एंड वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 में भेजना मतलब 8 में भेजना, 8 में अगर 3 सेट भेज दें तो 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। 8 अगर कंप्लीट हो गया तो 8 में ऑलरेडी एक सेट था एंड 3 कंप्लीट सेट मतलब 20, तो फिर 3 1 2 3 4 5 एक सेट, तो 20 माइनस 4 16 + 9 25 तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये सबको वो लेने का, राइट। तो दूसरा एग्जांपल क्या है कि वी हैव 47 52 64 13 और 91। ठीक है, कम और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का इज 8, उसके बाद दूसरे वाले का इज 0, तीसरे वाले का मॉड है 8 + 4 is 12, उसके बाद fourth one is 0 and last one is also 0, so these numbers can completely move on really। 64 को 12 लाख चाहिए, तो जो सबसे बड़ा है उसमें सब आएगा, बट कैन वी डू 8 ट्रांसफर्स टू दिस वन? 8 ट्रांसफर्स मतलब लॉस ऑफ लीडिंग टू 2, बट देखना इज इट वर्थ इट। तो इसमें वी विल बी लीविंग 8 कॉइन्स लॉस अगर नहीं लेते हैं, बट 8 ट्रांसफर्स करते हैं तो वी विल बी लूजिंग 8 इंटू कितना, 2 रुपये, 16 कॉइन्स लूज हो जाएगा। ठीक है, फिर 16 कॉइन ट्रांसफर में लॉस होगा, प्लस 8 पॉइंट ये यहाँ से उठा के ले पाएंगे, राइट। तो ठीक है, वी कैन डू दैट, एक्चुअली वी कैन जस्ट ये पूरा ट्रांसफर यहाँ करते हैं। यहाँ ट्रांसफर करने में वी विल लूज सम अमाउंट, 8 ट्रांसफर्स, तो 91 इज एक्चुअली 7 ट्रांसफर्स। ठीक है, 7 ट्रांसफर्स हो जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स वी आर लूजिंग 7 into 2 points,
13 can do a one transfer, so we are 16 coins lost. Okay, so 11 into 8 plus 47, 135, and 35 divided by 30. I 35. The math is not working. 91 है. Okay. तो 91 जब भेजे तो 2 रुपया काट लिया सब. हर 13 ट्रांसफर में 11 मिला. You can do 7 13 transfer, so 7 into 11, 77 मिला. 77 मिला. Seven मिला, and 11, that is 88. Mod is 2. 8 का mod है. Seventy seven 64 में ट्रांसफर हो जाएगा. 50 is 4 before 29. हाँ 29 सेव नहीं किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर किए, we lost 16 points. यहाँ लाने में 16 पॉइंट का लॉस हुआ. और अगर यहाँ पे यहाँ से अगर सारा पॉइंट्स बेचते भी हैं, still we won't be able to take all the points. ऐसा क्यों? क्योंकि 47 है. इलेवन ऐड करते, 12 ऐड करते तो कुछ होता है. मतलब 12 6 चलो 11 चार्ज 11 था ना, कितना कम है. 11 था. और बढ़ गया. ठीक है, we're not saving this. ये लास्ट में 1000 तो एक ही बैंक करते हैं.
एक एक करके ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 रुपया लगे तो एक एक करके ट्रांसफर कर सकते हैं, और 1 रुपया हर चार्ज में लगेगा। तो एक निकालेंगे और एक मिलेगा, एक निकालेंगे एक मिलेगा, पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते। 15 का ग्रुप बना सकते हैं, फॉरेन करके देख सकते हैं। 34 43 52 34 43 52 15 का टेबल में 10,000 रेसिपी 4 रेसिपी नहीं 45 ना 13 45 7 कभी परफेक्ट नहीं है सर, उससे ये है तो क्या कर सकते हैं कि 2 बार में यहाँ भेज दिए और 4 बार में यहाँ भेज दिए। 4 प्लस 50 प्लस 43 माइनस 8 मिलेगा कितना? ये तो माइनस हुआ और कितना प्लस हुआ ना, ये 3 5 इंटू 1 रुपया, 1 रुपया का no one is bothering to save, right? but उसमें सेव किया गया, इसमें सेव नहीं किया गया क्यों? तो 2 बार में ये चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा 5 इंटू 4 रुपये 19 माइनस ओके, ये तो सिंपल है। एक में सबसे ज्यादा मॉड किसका है? मतलब टारगेट को 0 रखो या 0 और मॉड if जो भी एलिमेंट है मॉड अच्छा मॉड जो भी वैल्यू है मॉड एट वर्थ if mod is more than m is more than 1, we have to save it and we have to save the index. Okay, with it अगर I'm gonna save it also. Done. इंडेक्स सेव हो गया, जस्ट बाकी सारे इंडेक्सेस को वो करना है, ट्रांसफर अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट ट्रांसफर हो कितना अमाउंट ट्रांसफरेबल। अच्छा इफ
I not equal to 3, ठीक है। अब क्या करना है, सम को डायरेक्टली प्लस कर देना है वी आई, नहीं तो वी आर प्लस इंट अमाउंट जो भी बचता है इज पूरा अमाउंट है। सबसे पहले तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इससे, वी आई है उसके बाद मेरे टारगेट से डिवाइड होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो अमाउंट चाहिए उससे, रेसिड्यू विल बी मोर सम प्लस इक्वल्स टू अमाउंट। ओके चलो चलो मैक्सिमाइज नहीं करना है, तो चाहिए पच्चीस टू 9 के दौरान आंसर आंसर कैसे हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। Then we'll be transferring 12th number expected 3 from 3. 12th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 the expected expected 3 found 2 1 3 है मेरे पास एंड 2 1 है, तो क्या कर सकते हैं, सो 1 छोटा है तो मॉड उतना ही होगा, पूरा मॉड एंड 3 से मॉड करेंगे तो क्या होगा, अगर मॉड सेम है देन वी कैन डू इट बाय वैल्यू, मॉड है इक्वल है, आई थिंक दे आर सॉर्टेड, सॉर्ट कर देते बस, सॉर्टेड नहीं होता।
1 2 3 4 5 6 7 16 1 1 का क्या सीन है? Expected 3.2. Vendor नहीं होनी चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ I have 8, right? हाँ 2 why 2 2 3 1 and 1 3 में क्या प्रॉब्लम है कि group size is 3 तो remainder 1 है, so remainder 0 है। I should transfer this with cost. Cost is very high, है ना? Cost is high, मतलब 3 रुपये भेजेंगे तो 1 रुपया जाएगा, टोटल कॉस्ट 2 रुपया होगा। एंड ट्रांसफर ना करे तो है ना? सेम कि ट्रांसफर करना या नहीं करना, have to choose। तो बचेगा नहीं, I can transfer it out। मस्ती 1 हो गया। Transferring cost is also a measure। CP तो ये राउंड तो स्टार्ट करो। तो ट्रांसफर करने से बाद I can choose ट्रांसफर करने से बाद I can choose
मॉड के हिसाब से अगर सॉर्ट करो तो एंड by transferring नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो हम जैसे हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे मतलब वेस्टेज 0 हो रहा है और ट्रांसफ़र का वेस्टेज कितना है 2। Rana is good on transfers. Support me. In check की oh किंतु तो इसकी सबको एज अ बेस बना के ट्रांसफर लिख सकते हैं एंड है ना 2.5 है तो इसलिए हम इसको सब लोग का ट्रांसफर अमाउंट वो कर लेते हैं करंट को सम करते हैं सॉर्ट करने का जरूरत for int I equals to 0 I less than I plus plus so and sum 0 sum next study is s equals to value तो ट्रांसफर किया जाए तो दिस मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर ठीक है करेक्ट दिस मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर अब सबको बेस बना के देखते हैं एंड आंसर प्लस इक्वल्स टू इसका ट्रांसफर अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको पूरा जोड़ते हैं int new answer equals to sum minus this amount सब खुद का ट्रांसफर स्कोर मतलब और प्लस ये खुद आंसर को बस मैक्स करना मैक्स और आंसर कॉमा न्यू आंसर भी दिक्कत सकता है
Great. That was it for today. See you in the next one.